हाँ तापरे जेमती आमे रामसर डे माने वेटलैंड डे सेलिब्रेट करछु हां सर 2 Yes, sir. फेब्रुआरी February 2. 19 साइन पर आइतलो काहे से दिन आपन को साइन हेतिला आଜ୍ଞା हां रामसर तो लाइक दैट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किछि हेतिला ना किछि भी नथला हां सर सर हेतिला स्टॉकहोम हां कॉन्फ्रेंस हेतला कोन हेतिला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हेतला Stockholm 1974 रे फर्स्ट टाइम पई एनवायरनमेंट को माने माने फर्स्ट एनवायरनमेंट टाइम पे ऊपर गोटे इंटरनेशनल लेवल रे किछि गोटे किछु सबमिट हेतला हेतिला यस ता यस सर पूर्व केवल प्लानिंग थिला बट केबे समस्त मिसी नथले गोटे प्लेटफॉर्म रे डिस्कस करिया पे कॉमन एजेंडा कोन रहबा आगु जाय कि so that was the significance of your world environment day that's why we are celebrating on 5th of June every year okay ठीक अछि नेक्स्ट आउ डिफरेंस कोन अछि जो अपन कहले स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस और स्टॉकहोल्म कन्वेंशन दिटा गोटे ना अलगा सर दुईटा अलगा सर अलगा कोन अछि स्टॉकहोल्म कन्वेंशन रे कोन हितला सर सेरा स्टॉकहोम सर सेरा ओजोन लेयर डिप्लेशन पई गोटे हिला कि नहीं सेटा सेटा तो आपने मॉन्ट्रियल कथा कहूछ वियना कथा कहूछ वियना कन्वेंशन गोटे और गोटे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कन्वेंशन और प्रोटोकॉल भीतर डिफरेंस बुझछन आज्ञा प्रोटोकॉल्स माने सर सेट ऑफ गाइडलाइंस सर केतरा हां हमनी होती हां हां कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन कोन माने कोटा अधिक इफेक्टिव प्रोटोकॉल टा अधिक इफेक्टिव ना कन्वेंशन टा अधिक इफेक्टिव सर प्रोटोकॉल टा बेसी इंपोर्टेंट यस इट्स प्रोटोकॉल जब भी देखो सी जेतोला हम कहूछु यूएनएफसीसीसी तो यूएनएफसीसीसी रे हम कोन कहूछु यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन सो इट्स ए कन्वेंशन और द कॉन्फ्रेंस तो सेठी कोन मोटा मोटी माने गोटे पाथवे डिसाइड करा हबो बट एग्जैक्ट फ्रेमवर्क कोन रहिबो एग्जैक्ट एडाप्टेशंस कोन रहिबो दैट इज बीइंग डिसाइडेड थ्रू ए प्रोटोकॉल तो सेठी पे हम यूएनएफसीसीसी रे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पढुछु जेमति कि क्योटो प्रोटोकॉल हिला ओके सो क्योटो प्रोटोकॉल इज ए पार्ट ऑफ योर माने ब्रॉड यूएनएफसीसीसी so like that जेमति हमें वियना कन्वेंशन हला वियना कन्वेंशन कहिला जे व्हाट इज वियना कन्वेंशन वियना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू योर ओजोन होल ओजोन होल हां फर्स्ट टाइम पे ओजोन होल डिटेक्ट करा हला तो इफेक्टिवली कलेक्टिवली जते भी वर्ल्ड रो सब माने कंट्रीज अछंती दे केम अंडर ए पर्टिकुलर माने गोटे पर्टिकुलर फोरम अंडर को आसिले तो दैट इज द वियना कन्वेंशन से माने डिसाइड कले कोन करिवा दरकार व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन बट एग्जैक्ट अप्रोच टू कहूछु दैट वाज नॉट अडॉप्टेड इन द वियना कन्वेंशन दैट वाज अडॉप्टेड इन द 1987 से हमें जेतो कहूछु योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जेतो बडा आसिला तो वी आर स्टडीिंग अबाउट दैट तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ता कोन करछि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सर सब्सटेंस को जो सब्सटेंस गुडी को डिप्लेट करछि ओजोन लेयर को ता ऊपर मॉन्ट्रियल तो व्हाट वी आर सपोज टू रिमेंबर कि ओडीएस हमें बन रखिया माने सॉरी ओडीएस जो कहउछ हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस तो जते भी से माने कैटेगराइजेशंस कर देले एक्स वाई जेड एन नंबर ऑफ जो भी हमें माने क्लोरीन हो ब्रोमीन हो नाइट्रोजन कंटेंट किछि भी जति गैसेस अछि दैट हैज पोटेंशियल जोटा भी किछि पोटेंशियल अछि दैट कैन डिप्लीट योर ओजोन ओजोन होल रो अर्थ कोन माने एंती हमें जंती घर रो छात रे कोणा ही जाउची सेंती होउची कि व्हाट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड बाय ओजोन होल no this is some I'm more ida kohuni because this is very much related to your subject studies ozone hole ro sir किछि हां sir ozone hole होची ozone जो thickness अछि ताधरे टिके माने थिनिंग इफेक्ट देखा जिवो very good that's the thinning of your माने ozone layer जो अछि ozone layer what under which unit we are measuring it already Dobson ठीक अछि गोटे सर्टेन डॉप्शन यूनिट एग्जैक्ट नंबर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ माने आपण टेक्स्ट बुक रे पढि थिबे इफ नॉट देन डू रिफर कि केते थिकनेस टू डॉप्शन हां जदी इफ इट इज लेस देन दैट एग्जैक्ट नंबर सॉरी आई एम नॉट एबल टू ओम जदी क्वेश्चन इफ यू आर श्योर देन एवरीवन शुड रिमेंबर अदरवाइज यू कैन गो होम एंड जस्ट सी वंस कि केते डॉप्शन यूनिट टू जदी कम होबो थिकनेस देन इट इज कंसीडर्ड टू बी ओजोन होल ओके सो लाइक दैट तो ओजोन जेतु होल माने ओजोन रो थिकनेस कम होतला तो ओजोन को हमें जेतो कहू ओजोन व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ ओजोन लेयर
परसेंट ओजोन लेयर मिलुची कोठी स्ट्रेटोस्फियर रे स्ट्रेटोस्फियर तो whether ozone layer is completely found in stratosphere ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ layer ବି ମିଳୁଛି ट्रोपोस्फियर भी मिलुची ट्रोपोस्फियर भी मिलुची तो ट्रोपोस्फियर जो ओजोन मिलुची ताको हम बैड ओजोन कहूछु ओके बिकॉज़ तार ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स अछि ओके बट जो गुडा को हमें हां जो गुडा को हमें स्ट्रेटोस्फियर में मिलुची दैट इज अ गुड ओजोन बिकॉज़ ओजोन रो मोटा मोटी काम कोन मतलब मेन पर्पस सर अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन to absorb the UV rays, harmful UV rays to be specific. UV rays रो different parts होची UVA, UVB, UVC कही की तो that absorbs. We want ozone to protect माने prevent the UVC to penetrate into the atmosphere. So that work is being performed by ozone. यदि ସେଇଟା penetrate कर जाती it has the potential to cause the skin cancers and all. तो ସେଇଥି पे ଆମେ आनिथिलु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ସେଇଠି जो substances गुडा को declare कराइतला it is the ODS ozone depleting substances. We have to take our own effort to minimize the release of those you can say substances. हाँ तो सेठी CFC तो आसिला but CFC हमें सेठी initially कौन decide कलु कि CFC is going to be replaced by HFC. Okay, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस कर देबो किंतु परे देखिलु कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो रहिला it is not a ODS. That's why we have decided in the initial time. हाँ very good. तो HFC परे देखिले जे HFC गोटे ODS तो नुह but it is a global warming potential वाला gas. So again if you're replacing something with another dangerous gas so that is also not serving your purpose. केवल ozone hole बंद हो गले तो हबनी global warming भी तो कंट्रोल करियार अछि. So that's why another agreement followed that is called the Kigali agreement जोठी 2014 exactly 14 या 21 हाबी मते मन पड़नी. So there what we have decided कि we are going to reduce, we are going to check our HFC release also. Okay, एसो जिंस अछि. हां स्टॉकहोल्म कन्वेंशंस कथा कहउतले मु व्हाट इज द स्टॉकहोल्म कन्वेंशन इट इज द POP जो हमें कहउछु ओके persistent organic pollutant that we are supposed to check with. Okay, Cartagena protocol जो हमें कहउछु that is related to the protocols तो एमती फिंगर टिप से घोसी के रखिथिबे. What is Cartagena? बायोसेफ्टी सर हाँ ठीक अछि. हमें जो माने जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस जो कहउछु तो GM क्रॉप्स अन्य जहाँ भी तो दैट कम्स अंडर द Cartagena protocol. ओके ठीक अछि. तो मु सकाळे गोटे PDF शेयर करथि नॉट एक्जेक्टली द PDF मु किछि से एंशिएंट इंडिया लिखाइतला बट नॉट ओनली एंशिएंट इंडिया किछि फैक्ट्स लिखाइतला तो सेठी भी किछि GM सुपरे अछि. जदि इफ यू हैव गॉन थ्रू वेल एंड गुड इफ नॉट देन प्लीज गो थ्रू दैट. सेटा रिसेंट न्यूज रो जहाँ भी जिंस गुडा होतला ताको मु एमती स्क्रिबलिंग करथि तो आई फाउंड इट मे बी हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम. तो प्लीज गो थ्रू दोस थिंग्स. सेठी आपनकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऊपर भी लिखाइ छी. तो इन जनरल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो आम पाखरे बहुत गुडे कंफ्यूजन थाए सब गुडे. तो इवन दैट मे बी क्लियर्ड इफ यू गो थ्रू दैट. जेमते कि फर्स्ट स्टेज कोन सेकंड स्टेज कोन थर्ड स्टेज कोन व्हेन वी आर कमिंग थ्रू द करंट अफेयर्स तो हमें डायरेक्टली लिखु छु कि इंडिया हैज बिल्ट अप ए थर्ड स्टेज और एडवांस स्टेज समथिंग. तो थर्ड स्टेज कोन तो इनफॉर्मेटिव जाने को पड़िबो. इट्स गुड फॉर यू इफ यू वंस गोटे सब देखि दियंतु. ओके इफ यू हैविंग एनी डाउट देन डू लेट मी नो. सेठी किछि माने कल्चर रो भी किछि साइट्स गुडा को अछि. those temple architecture that was recently in news, you may encounter one or two questions from that, so it's good for you. ठीक है. If you have already gone through those informations here and there कोटे अन्य जगह then good अपन गोटे थोड़ा brush up कर देबे. But I found those informations are relevant for your examination. Sir a ancient PDF टा one day rapidly खाली हाँ ठीक है. We will discuss one day. Okay, no issues. Half an hour 40 minutes maximum 1 hour लगे. We'll discuss that too. ठीक अछि. तो मीन टाइम जते पर्यंत हम डिस्कस करी ने तो दैट्स फ्रॉम माय साइड वन रिक्वेस्ट आई एम डूइंग व्हाट देखो व्हाटएवर मटेरियल्स व्हाटएवर द सोर्सेस आई हैव आई विल बी शेयरिंग माने रेगुलर इंटरवल रे. तो आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू लिटिल बिट ऑफ होमवर्क बिकॉज़ मोबाइल टाइम था देन आई विल बी टेकिंग योर 4 to 5 classes per day also. I am not denying on that. ठीक है टाइम रो कंस्ट्रेंट्स अछि देन इट इज एन आवर कोलैबोरेटिव इफेक्ट एफर्ट हवा दरकार कि आपण मान को रैंक आनियार अछि एंड आई विल बी लाइक मोर हैप्पी इफ यू आर क्रॉसिंग द लाइन. तो आई एम देयर. तो जते भी जहां प्रॉब्लम्स अछि फील फ्री टू आस्क मी. नो इश्यूज ऑन दैट. बट आपण को साइड जो टिके लेबर रहता है दैट इज मस्ट. ओके सो बी इनोवेटिव फ्रॉम योर साइड. बी कॉन्फिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो बारंबार भी पढ़िबे देन यू विल फॉरगेट थिंग्स इफ यू डोंट बिलीव ऑन योरसेल्फ.
Okay, you don't have to compete with others, you're competing with yourself. Don't see the crowd. Okay, you are unique and you have that potential. Once you have decided you are going to target for this examination, you will do it very easily. It will be a very easy, you can say, challenge if you make yourself constantly motivated till the completion of your third stage. Prelim is the first, second is the main, third is the your interview. Every stage has its unique importance. If you accept, you have to admit something. How best you do in your mains examination. If your interview is not good, then chances are there you may not get your choice of, you can say, service. So that is also one more another year of extension, then second year of extension. So it's better in a first go itself. We'll try our best. We'll give our best. Don't be demotivated. ये जो fringe elements गुड़ा को life रे आसुथिबे जाउथिबे, that's not important. What you have decided. So for this, because I have also gone through this journey, I know this is a bit hectic, difficult also, but this is your dream. You have to pursue this till you have completed, you have achieved your line. So don't be distracted. Okay, friends, family, and everything. I know this is a tough thing to compromise because kichi life ro important events मध्ये हमें compromise करचु, but mind my word. Okay, once you got through that line, you will find whatever pain you have taken, that is justified. Okay, so our basic lecture the one. Let's start. Okay, as I told you, आज टिके environment भी देखिया because completely economy में भी टिके bore लागू थे परे. So environment is a interesting part. Okay, so we'll do simultaneously. दिने एटा like that we'll be doing. ठीक है. Then coming to the first part. समस्त टिके देखिले एटा ना एकदम alienated होची. I have said that's why beforehand. समस्त देखिचंते I assume everyone has gone through at least. You have give a look to the PDF at least. ठीक है. तो फर्स्ट होची क्लाइमेट चेंज रो फर्स्ट पार्ट रे हमें ग्लोबल सिनेरियो रे देखुछु आईपीसीसी रो 6th असेसमेंट रिपोर्ट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज आईपीसीसी? तो आईपीसीसी होची जेमति लिखा छै, इट इज ए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज. ओके, तो कहारो कंबाइन एफर्ट रे आसला बाय द टू ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूएनईपी. ओके, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. यूएनईपी रो हेडक्वार्टर कोठी अछि? नाइरोबी. वेरी गुड. तो 1988 रे आसीथिला. ऑब्जेक्टिव कोन आर? तो आईपीसीसी गोटे यूएन रो बॉडी जे के असेस करू छै साइंस रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज को हमें क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करिया पे को टाइप ऑफ साइंटिफिक चिंसो को साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल चिंसो को हमें यूज करके दैट इज बीइंग यू कैन से एडवाइज्ड बाय योर आईपीसीसी. ओके, तोरा हेडक्वार्टर अछि जिनीवा रे. इफ नॉट माने हमें स्पेसिफिकली जदी करूमे तो ऑलमोस्ट ऑल हेडक्वार्टर हमें जिनीवा रे ही पाउछु. इफ वाडो जो माने स्पेशल हेडक्वार्टर्स जो अछि दैट वी आर गोइंग टू रिमेंबर इन ए सेपरेट वे. अदरवाइज जिनीवा इज कांस्टेंट. लाइक दैट वे आई यूज्ड टू रिमेंबर. नेक्स्ट आईपीसीसी ना वंस यू कैन से आईपीसीसी रो तो बहुत गुडे जिंस अछि. हां, वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि आईपीसीसी निजे कोनोसी साइंटिफिक रिसर्च करे नाही. ओके, तारो जेते सब तारो जेते अलाइड बॉडीज अछन जो माने ता सहित अटैच हे कि अछन जो बॉडीज गुडा को जेमति कि इंडिया रो किछि सब साइंटिफिक बॉडी अछि, अन्य कंट्री भी साइंटिफिक बॉडीज अछि. दे आर डूइंग देयर साइंटिफिक रिसर्च एंड दे आर गिविंग डेटा टू द आईपीसीसी. फाइनली आईपीसीसी तक कंपाइल करके रिपोर्ट बाहर करे. दैट यू शुड टेक लाइक कीप इन योर माइंड. तो 2007 रे आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज मिलथिला. और से समय रे जने माने इंडियन चेयरमैन थिले से समय रे. ही इज आरके पेचोरिया. ओके, नॉट वेरी ग्रेट इंफॉर्मेशन, जस्ट कीप इन योर माइंड. तो आईपीसीसी रो सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड असेसमेंट एआर माने असेसमेंट रिपोर्ट. तो फर्स्ट और सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट कोन कहूची कि हमरो जो ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी 1.09 degree centigrade he said. So out of 1.09 degree centigrade, 1.07 is because of anthropogenic activity and only 0.02 degree centigrade is the natural. Okay, so you can see how much anthropogenic is contributing to the anthropogenic activity, human activity is contributing to the global warming. Okay, तो आउथे उपरु टिके जे देखिबा आईपीसीसी रो डिफरेंट रिपोर्ट्स बाहरे तार मेन होची असेसमेंट रिपोर्ट. ओके, ताकू छाडला पर स्पेशल रिपोर्ट्स मध्ये असे डिफरेंट यू कैन से मेथोडोलॉजिकल रिपोर्ट्स मध्ये असे डिटेल वी आर नॉट सपोज टू गो. ए सब दरकार नै. तो 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो कहूछु एटा तीनटा पार्ट रे आथिला.
गोटे पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट 2021 रे आस्थिला थर्ड पार्ट आस्थिला 2022 रे एबे वर्तमान सिंथेसिस रिपोर्ट आछि माने 1 2 और 3 तीनटा कंबाइन करिकि फाइनल गोटे यू कैन से आमे कहि परिया गोटे कंपाइलेटेड रिपोर्ट दे हैव पब्लिश्ड ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर आईपीसीसी तो वर्तमान जो रिपोर्ट आछि ताकू तो हेडिंग कोन इट इज द मिटिगेशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज ओके सो दैट्स द क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2022 ओके different reports that asla that is not important हाँ आमे जे देखिबा आईपीसीसी टारगेट डेटा अछि दीटा पाथ अछि हम पाखरे गोटे पाथ कोन कहूची जदि आमे हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड भितरे जे लिमिट करिया को चाहूचे व्हाट शुड बी आवर अप्रोच ताको आमे C1 पाथ कहूछु आ गोटे C2 पाथ अछि दैट इज कॉल्ड जदि आमे 2 डिग्री भितर ताको रखिया पड़ुछु रखिया जदि आमे चाहूछु कि हम ग्लोबल वार्मिंग विद इन 2 डिग्री रहू approach should be different if it is to be within 1.5 degree the approach should be different jodi 1.5 degree bhitar rakhiya ko amo target achi then before 2005 mane 2005 को 2025 को हमें peak level हिसाब रे consider करिबा आउ 2025 रे maximum हमें emission हमें जो 2025 से जो भी emission होचे हम भाबिया ताको maximum emission suppose भावंतु कि कोटे कंट्री रो maximum emission 2025 रे होची 100 million ton तो 100 बिलियन टन रो 43% कट माने 43% कमी गला ओनली 57% 57 बिलियन ही से एमिट करिवो बाय 2030 तो एतिके रिडक्शन हमको करेउ पड़िबो देन ओनली वी वुड बी इन ए ट्रैक टू कीप आवर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री भीतर ताकू आउ तासे तो कोन कहूची 2050 सुदा हमें कार्बन न्यूट्रल होबा को पड़िबो अगेन जो भी माने मीथेन रो जो एमिशंस अछि दैट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 34% बाय 2030 तो 43% आमे रिड्यूस करिबा कार्बन एमिशन रो आउ तो मीथेन एमिशन को 34% रिड्यूस करिबा बाय 2030 सी वी आर नॉट गोइंग टू मॉग अप ईच एंड एवरीथिंग हां का डाउट अछि हां yes sir 43% by 2030 per year or नहीं पर नॉट पर ईयर माने 2023 सपोज मु कहली ना 2025 रे जहां भी एमिशन हिला ताको हम मैक्सिमम एमिशन भाबिबा ओके 2025 रे सपोज 100 से एमिशन करथिला तो 2023 2030 बेल को तार 47% कमे देबो 43% हमो कमे देबार अछि बुझि परछन पर ईयर तो कमे पारिबा नै सेटा ताकू क्रोनोलॉजिकली धीरे धीरे से एफर्ट को हमको आगु नै कि जिबाको पड़ियो दैट वाज द टारगेट तामने कहि परिबा इन 2030 हमें केवल 57% ही कार्बन एमिशन हां करिया 2025 रे जते एमिशन हितला तार केवल 57 ही रखिबा ओके ओके सर बुझि परछन एमति नै जे 57 करिके हमें अफोर्ड करिबानी तापरे पुनी 2050 सुदा हमको न्यूट्रल भी तो करिया अछि ओके सर से कंपेयर टू 2025 जोटा पीक थियो तार 57% yes if we have the second target जे 2 डिग्री भीतर हम रखिया अछि then 27% by 2030 आ 2070 सुदा हमें कार्बन न्यूट्रल कथा कहिबा आ ए केस रे कोनो से मीथेन रिलेटेड किछि टारगेट दिया जाय नाही सेकंड अप्रोच रे ओके so that is the thing अबे हमहु कोन करिया को पड़ियो हां आ गोटे होची वर्तमान जदि हमें कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन देखुचे इट इज अराउंड 418 ppm stands for parts per million okay so last 8 lakhs year रे it has to maximum carbon emission you can say carbon percentage level in our environment सेटा में कहि परियो ओके तो किछि ट्रेंड्स हमें देखिबा जदि जेमति एमिशन कथा कहूची तो एमिशन तो कंटीन्यूअसली माने जदि क्वेश्चंस आपन को कोठी भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रे आसी जाय कि को भी गोटे डिकेड रे को भी गोटे माने पोर्शन ऑफ ईयर रे हमें कम करछु एमिशन नो ever since we are rising only okay so total greenhouse gas initial देखो तो 2010 to 2019 it is rising from 20 माने 1850 to till present it is also rising okay so ever since we are rising only so what are the scenario आमे जे देखियो तो maximum contributing sector होची energy sector next as a industry sector and finally it is the agri sector okay that's a broad picture you should keep in your mind जोटा का mains answer writing रे भी help करिवो ठीक अछि then various issue दरकार नै and inadequate current policy हमें कहूछु वर्तमान हमरो जो policy हमें adopt करछु global level रे यदि से policy को continuous यदि करिबा then by the end of the century our temperature should not be below 2 degree or below 1.5 degree it will be to 3.2 degree centigrade increase करजिबो so that will be very bad conditions so that is called the inadequate current policy okay coming to the second thing एतिकी थिला हमरो first IPCC रो 6th assessment report रे तो हमको एति हां ओम कोन सर से जो मीडियन ग्लोबल वार्मिंग ता सेरा टिके कहिबे कि कोटा मीडियन सेटा जो ग्लोबल सर अपन लिखि चंदी सेटा पाथवे सेटा टिके जानि परलेनी
नहीं देखो से पाथवे ना पाथवे को काहे केते डिटेल जाउनी बिकॉज़ आईपीसीसी रो बहुत गुडे पाथवे होछि हला C1 पाथवे C2 पाथवे एते डिटेल ना हमहु दरकार कोन जाय पचरिबो तो सेहिति पे ना हमें ताकू बर्तन एते ध्यान दबार नै जो मीडियन ग्लोबल वार्मिंग जो कहउछ ना मीडियन माने कोन इट्स एवरेज माने जदी हमें ए वर्तमान हमें जेतिकी सपोज हमें वर्तमान जो क्लाइमेट पॉलिसी हमर अछि आमे जो प्रकार माने फ्यूल को अडॉप्ट करूछु बा जो प्रकार इंजिन को अडॉप्ट करूछु हमें किछ ना किछ तो इनिशिएटिव नउछु डीजल बैन करूछु इथेनॉल रो ब्लेंडिंग करूछु तो एटा आमो सिनारियो रे बट ग्लोबली भी सब कंट्री निज निजरो किछ किछ इनिशिएटिव्स नउचंदी यदि ए इनिशिएटिव हमें कंटिन्यू करियो ना इट इज इनएडिक्वेट एटा ठीक नुह एटा यथेष्ट नुह कहया कथा यदि ए टाइप हमें कंटिन्यू करिबा देन बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी द टेंपरेचर विल बी 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज गेटिंग माय पॉइंट यस सर pathways को बेसी डिटेल मो इति पे जाउनी बिकॉज़ दिस pathways एवरीथिंग इज नॉट दैट इंपोर्टेंट कि एकदम आपन रट्टाबाज करके जीवा को पड़ियो ओके वी आवर अप्रोच शुड बी मिनिमम अंडरस्टैंडिंग प्रीलिम इंफॉर्मेशन एंड मेंस इंफॉर्मेशन दीटा को हमें नेगी जीवा सो एस किछि कहउतले कि सर ए जो 3.2 डिग्री कथा जो सर कोहा होची सर एटा हाँ। माने प्रेजेंट टेंपरेचर रो सर 3.2 डिग्री कमे जीवन ना सर केमति सर नहीं नहीं जेतोला हमें कहू सेटा प्री इंडस्ट्रियल लेवल कथा कहू जेतोला आज डेट रे हमें कहूछु प्री इंडस्ट्रियल लेवल माने हमें जो बिफोर 1850s को हमें कंसीडर करू तो दैट इज द प्री इंडस्ट्रियल लेवल तापर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन आसी गला इन जनरल दैट इज द कन्वेंशन दैट इज बीइंग अडॉप्टेड ओके आज्ञा सर ठीक अछि तो जेतोले इंक्रीज को जाय केबे आज डेट रो टेंपरेचर को न जेतोले हमें कहिलु प्रथमे कि 1.09 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी इंक्रीज कर जाय छै तो केबो टेंपरेचर अनुसार from 1850 okay from pre-industrial level that should you keep in mind okay coming to the methane emission तो methane कथा हमें देखिया बर्तन methane कोन we know methane तारो CH4 is जिंस तो methane रो जदि हमें देखिबा how powerful it's a global माने गोटे global warming gas कथा कहूछु GHG कथा कहूछु okay तारा लाइफ स्पैन कोन 20 years जोटा कि माने 20 गोटे जदि methane emit हला तो it will stay in our environment for almost 20 years okay तो ग्लोबल वार्मिंग जोटा कि कार्बन डाइऑक्साइड टू कम लाइफ टाइम होची कार्बन डाइऑक्साइड टू कम बट तार पोटेंशियल जदि देखिबा देन इट इज मोर देन इट इज 80 टाइम ग्रेटर देन द कार्बन डाइऑक्साइड ओके जेतबेले ओवरऑल जदि क्वेश्चंस आपन को देखिबे कि ओवरऑल ग्रीन माने ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एटी जो लिखा है साइड रे दिस इज द ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो एक नंबर रे सबोडा से कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड नंबर रे आसे मीथेन और थर्ड नंबर रे आसे N2O okay the three things at least you should remember तो हमें जो ओवरऑल कथा कहूछु तबले कोन हमें कंसीडर करले जो ओवरऑल कहले बिकॉज़ वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दीटा फैक्ट को प्रथम कथा होची इंडिविजुअल रो केते तार ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अछि और केते वर्ष पर्यंत से एनवायरनमेंट रे एग्जिस्ट करिवो तो बाय कीपिंग बोथ द थिंग्स इनटू अकाउंट वी आर फाइनली माने केम अप विथ दिस लिस्ट ओके तो जदि हमें देखिबा मीथेन रो एमिशन कथा तो मीथेन रो एमिशन यू कैन से हाईएस्ट फ्रॉम द वेटलैंड्स देन fossil fuel extractions रे यूज होची ना कि बर्निंग रे यूज है इट्स मोस्टली फ्रॉम द एक्सट्रैक्शंस देन थर्ड वन इज द लाइवस्टॉक ओके सो दिस इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशंस हमें कहूछु तो ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट 2030 गोटे 2030 बेसलाइन रिपोर्ट ए होची मीथेन प्लेट्स हमें गोटे पढिबा परे सो एटा गोटे रिपोर्ट आस्तिला ए रिपोर्ट कोन कहूची इट वाज रिलीज्ड के रिलीज करथला क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पॉल्यूशन ओके जोटा कि गोटे यूनाइटेड नेशन यूएनईपी रो गोटे प्रोग्राम यूएनईपी रिलीज करथला मीथेन रिलेटेड गोटे रिपोर्ट ओके दैट वी शुड रिमेंबर ओके बिकॉज़ मेन से आसीबने लिखिया पे जदि आसीओ भी हमें ए सब डिफरेंट सेक्टर्स गुडा को लिखिबा रादर देन राइटिंग ईच एंड एवरी डिटेल्स ओके नेक्स्ट जो हमरो कॉप 27 जो हेतिला क्लाइमेट एंड द क्लीन एयर मिनिस्ट्रियल मीटिंग एट द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो यूएनएफसीसीसी रो 27th मीटिंग हेतिला दैट सेटा के हमें देखिबा तो सेठी फ्रेमवर्क आस्थिला ओके तो डिटेल हमें देखिबा तार किछि ये नै हां कमिंग टू द मीथेन प्लेज 2021 रे वी हैव सॉ द लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज record of the methane रो सब द हाईएस्ट रिलीज हमें देखतु 2021 रे ओके तो मीथेन प्लेट्स कोन फर्स्ट थिंग हम के इंडिया इज नॉट ए मेंबर टू दिस बिकॉज़ हमरो बहुत एग्री रिलेटेड सेक्टर्स अछि बहुत फार्मर अछंती जो माने ए एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर परिबेन जा पर हम मीथेन प्लेट्स को ठीक से सस्टेन करि परिबे ओके सो प्लेट्स कोन थिला टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन बाय 2030 एडा असला कॉप 26 रे एडा भी
माने इंडिया पार्ट नथिला तार गोटे फॉलो अप एक्शन होची ग्लोबल मीथेन प्लेज जोटा के असला कॉप 27 रे ठीक अछि तो सॉरी 26 रे ही आसला तो एटा लॉन्च करतला 20 माने कॉप 26 रे कॉप 26 कोटितला ग्लासगो रे हितला यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन एमाने लीडिंग कंट्री थिले जो माने ए ग्लोबल मीथेन प्लेज को नेके आसले कोन टारगेट थिला जो मीथेन रो एमिशन अछि ताको हमें एटलीस्ट 30% को रिड्यूस करिबा बाय 2030 ए जिंसटा बर्तमान तो बुझी पड़थि 2020 रो जहा लेवल थिला ता तुलना रे 2023 में 30% ताको डिक्रीज करिबा ओके तो मिथेन प्लेज जदि पचारिबो मिथेन प्लेज कोन एटा गोटे यूएन रो पार्ट और समथिंग लाइक दिस नो दिस इज जस्ट ए एनजीओ टाइप रो गोटे माने से माने गोटे माने फोरम क्रिएट करके इट्स एनजीओ इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी प्लेज कहितली काहे कि कंसर्न्स ओवर द इंपैक्ट ऑफ द ट्रेड ऑन द कंट्रीज वास्ट फार्म सेक्टर हम बहुत फार्मर अछि बहुत गुडे लोक अछि प्राइमरी सेक्टर सहित एंगेज हे अछि इवन लाइफ स्टॉक रो मध्ये बहुत बड़ पॉपुलेशन अछि इंडिया रे सो दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट ए पार्ट टू मिथेन प्लेज नेक्स्ट ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर जेम कहूछु तो जेम कोन जस्ट 30 फ्यूल माने गोटे रिपोर्ट कोन कहूची कि केवल 30 टा फ्यूल कंपनीज अछंती वर्ल्ड रो जो माने कोन करूचंती दे आर कंट्रीब्यूटिंग नियरली हाफ ऑफ द माने ग्लोबल रो मीथेन एमिशंस करूचंती ओके जो आमे पढिथिले कि ए जो ऑयल एक्सट्रैक्शंस रहिला फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शंस रहिला दैट आल्सो ए मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ योर मीथेन तो गोटे रिपोर्ट कोन कहूची 10 टा ही केवल एमती कंपनीज अछंती मेजर कंपनीज अछंती सेही माने कोन करूचंती हाफ ऑफ द माने ग्लोबल वार्मिंग मीथेन को एमिट करचंती ओके सो ताकू मॉनिटर करिया पे टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट टॉप 10 पॉल्यूटिंग कंट्री सो टॉप 10 पॉल्यूटिंग कंपनी दिस you can say this is an non profit organization was brought into picture जोटा ना होची ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर नेक्स्ट इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी एटा गोटे ऑब्जर्वेटरी क्रिएट होची कोठी एटा इनिशिएटिव बाय द यूएनईपी सपोर्ट दोची यूरोपियन यूनियन कोन आरो ऑब्जेक्टिव कोन इट्स मीथेन एमिशन को फास्ट ट्रैक जदी गोटे रिपोर्ट कोन कहूची जदि मीथेन एमिशन को कट डाउन करि पाउरुचे ठीक भाबरे देन इट इज द फास्टेस्ट वे टू टैकल द क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट टर्म ओके तो एटा गोटे रिपोर्ट कोन कहूची जदि मीथेन को ठीक भाबरे कट करि पारले मीथेन एमिशन को तो एटा गोटे फास्टेस्ट वे हबो आमे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करि परिबा ठीक अछि तो ए जो माने हमें पढ़िले आईएमईओ माने इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ये होची मीथेन जो ग्लोबल मीथेन प्लेज देखले तार गोटे इंप्लीमेंटिंग पार्टी ठीक है कंफ्यूजन होचो मे बी जदी होची आउथरे कहिबे हम कहिबी नेक्स्ट नासा रो गोटे माने नासा रो गोटे मिशन अछि द प्रोजेक्ट अछि दैट इज कॉल्ड द एमिट मिशन ता काम कोन से आइडेंटिफाई करिबो एमटी सुपर 50 एमिटिंग मीथेन गैस माने एमटी कोन 50 टा साइट अछि वर्ल्ड रे जोटा कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मीथेन एमिट करछन को कंट्री बा को एरिया रे थिबो से 50 टा जेमति कि सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया माने साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ए रीजन गुडा करे को 50 टा टॉप एमिटिंग साइट अछि माने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मीथेन को एमिट करछन क्लियर अबाउट दिस ए भीतर काहू डाउट अछि डू लेट मी नो आई विल क्लैरिफाई अगेन मीथेन प्लेज बुझिले मीथेन प्लेज इंडिया गोटे मेंबर नुह एटा गोटे कॉप 26 रु आस्थिला यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स मिसे की 30% कट डाउन करिवे मीथेन रो एमिशन को 2020 लेवल रु बाय 2030 ओके एटा फर्स्ट सेंस एटा गोटे एनजीओ कोनोसी यूएन वगैरह तो बॉडी नुह सेकंड ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ता काम कोन से गोटे रिपोर्ट कोन कहूची एमती 50 टा एमती आपनकर 30 टा फ्यूल कंपनीज अछन्ती जो माने कि हाफ ऑफ द मीथेन को एमिट करूचंती that is having a potential to the global warming okay eta gote again it is an NGO next gote IMEO जो कहले इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी एटा होची जो आमे ग्लोबल मीथेन प्लेज कहले तार गोटे पार्ट एटा माने से ये गोटे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ओके यू कैन से लाइक दैट तो एटा यूएनईपी रो गोटे इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन सहित मिसे कि ये कोन करिवो कि ए जो मीथेन रो एमिशंस को कम करबा चेष्टा करे बिकॉज़ गोटे रिपोर्ट अछि जदि मीथेन रो एमिशन को हम ठीक भाबरे कम करि परले देन इट विल हैव ए इंपैक्ट ऑन योर क्लाइमेट चेंज ठीक अछि तो लास्ट में आमे पढिले एमिट मिशन नासा रो आ काम होची 50 टा एमटी साइट अछि जे कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मीथेन को एमिट करछन दैट इट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई okay once identify माने अकॉर्डिंग हमें काम करि परिबे कमिंग टू द ओशन एसिडिफिकेशंस कोन होची सी ओशन रो जनरली जदी यू कैन सी दिस देयर आर टू कंपैरिजन लेट 1800 और 2100 रो कोन हबा कथा माने कोन प्रोजेक्टेड ओशन रो पीएच लेवल अछि दैट इज शोन ओवर हियर लेट 1800 रे
आम pH देखो इट इज बियॉन्ड 8 थिला सो दैट इज कंप्लीटली बेसिक नाउ इट इज ब्रॉट माने आमे वी आर एक्सपेक्टिंग it will come below 8 so it's not acid as of now but it is becoming less basic तो धीरे धीरे एसिडिफिकेशन आड़ को बढ़िया लगी कहीं होची बिकॉज जिते एटमोस्फियर रे बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी जाए किछि परिमाण कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन रे मध्ये डिसॉल्व हो जाए ओशियन इज आल्सो ए माने गोटे एटा भी गोटे कार्बन कैप्चर हिसाब रे काम करे सो as the carbon dioxide concentration is increasing in the ocean so the acid level is also increasing jota ki marine life fine is not good okay so reductions in the pH level of the ocean over an extended period of time the come ocean acidification score so this is a good definition if you want you can remember significance माने ocean acidification रो किछि significance that is what ମୁଁ already कहली तो mostly marine life ऊपर आर impact पड़िबो आर गोटे कंटिन्यूएशन से गोटे न्यूज अछि दैट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्टिक एरिया तो फर्स्ट जिंस हमें आर्टिक एरिया कोन बुझिबा कोरल यस एनी टाइप ऑफ मरीन लाइफ को हमें कहबा जस्ट गिव मी 1 सेकंड ओके तो व्हाट इज आर्टिक रीजन आर्टिक रीजन कोन जेतबे हमें देखु नॉर्थ माने 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ऊपर को ए जो सर्कल रहिला हमर तो आर्टिक सर्कल रो ऊपर जो कंट्रीज गुडा का एग्जिस्ट करछन दैट इज कॉल्ड द आर्टिक रीजन तो आर्टिक रीजन रे केतरा कंट्री छथि यू कैन सी ओवर हियर फर्स्ट यूएस आसे बिकॉज़ ऑफ इट्स अलास्का रीजन ताई नेक्स्ट कनाडा आसे अगेन ग्रीनलैंड आसे ग्रीनलैंड इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय योर माने डेनमार्क सो सेति पे ग्रीनलैंड आसे ताकू छेडला परे आइसलैंड आसे नॉर्वे आसे स्वीडन आसे फिनलैंड आसे एंड रशिया आसे सो दीज आर द 8 कंट्रीज ए भितर इंडिया रो गोटे रिसर्च सेंटर अछि दैट इज कॉल्ड द हिमाद्री कोठी अछि ए आइलैंड अछि सेवलबर्ड जो आइलैंड ता नॉर्वे रो ए जगह रे अछि इंडिया रो गोटे रिसर्च सेंटर दैट इज कॉल्ड द हिमाद्री ओके यू मस्ट बी एबल टू सी दिस ओके तो आर्टिक रिसर्च आमे देखुछु माने इंडिया रो जो हिमाद्री कथा मु कहिली 2008 रे हितला एबे रिसेंटली गोटे न्यूज रे थिला दैट इज कॉल्ड द इंड आर्क व्हाट इज इंड आर्क इंडिया's फर्स्ट अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी जोटे आर्टिक रीजन 2014 रे माने ताको लॉन्च कराइतला ए भितर गोटे रिलेटेड न्यूज अछि आर्टिक एम्प्लीफिकेशन व्हाट इज आर्टिक एम्प्लीफिकेशन सी आर्टिक एरिया जते फ्रोजन एरिया रही छै जोटी के आइस देखछु हमें आइस कैप जार अछि तो आइस रो एल्बिडो इज मैक्सिमम डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एल्बिडो कहा क्वेश्चन yes sir इट्स द एबिलिटी amount of energy transfer from a surface जेहेतु एटा सर व्हाइट सरफेस तेनु स्नो जोगु व्हाइट सरफेस रहले हाई अल्बिडो इफेक्ट रहइबो हां तो माने ब्लैक सरफेस रो लो अल्बिडो इफेक्ट रहइबो बस वेरी गुड तो हम कहि परियो जेते जे माने जार जेते लाइट कलर होची सेते से अधिक सन को रिफ्लेक्ट कर दोची सन रेज को रिफ्लेक्ट करची तो तार एल्बिडो हाई रहइबो तो जो आर्टिक रीजन पोलर रीजन रहिला जोटा फ्रोजन एरिया रहिला तो सेठी जेहेतु बहुत अधिक आइस थाए तार बहुत अधिक कैपेसिटी थाए जे ते विल रिफ्लेक्ट ता तो रिफ्लेक्ट कर देबे एनर्जी गुडा को ओके तो इट्स द नॉर्मल सिनेरियो बट आज बर्तमान जो ग्लोबल वार्मिंग फल रे धीरे धीरे जो आपनकर आइस गुडा को मेल्ट करछि ता फल रे आइस कैप रो कवर कमी जाउछि आ फल रे हमें कोन देखुछु कि व्हाट वी आर सीइंग लॉट ऑफ यू कैन से माने एल्बिडो जो अछि से एल्बिडो धीरे धीरे कमी बार लागि छै तो एल्बिडो कमीवा फल रे कोन होछि जो टेंपरेचर ता से रिफ्लेक्ट बैक करथिले ता फल से माने फ्रोजन टेंपरेचर राउंड द ईयर देखियो खोलला दैट इज नॉट येट ऑब्जर्व्ड ओके तो ए जो प्रोसेस टाको हमें कहू आर्टिक एम्प्लीफिकेशन माने आर्टिक एरिया रे जो टेंपरेचर अछि इट इज इंक्रीजिंग 4 times faster than the rest of the world so that is called the arctic amplification तो प्रोसेस हम कहि देली आपन को arctic amplification related आगोटे न्यूज अछि that is called the zombie ice okay so what is zombie ice रो अर्थ हि होछि माने तार गोटे एम्प्टी आइस zombie ice is a massive ice in the जोटा कि ग्रीनलैंड रे आपन देखिया को मिलिबो okay so जदि एटा completely जदि मेल्ट डाउन करि जिवो then you can sorry good a second what you will observe the global sea level will increase by 10 inches okay तो एटा गोटे एम्प्टी आइस देखंतु जार कोर एरिया जो अछि एबे भी मेल्ट हेन बट ता जो पेरिफेरिक एरिया गुडा को रहिला दैट इज ऑलमोस्ट मेंटेन
सो जो पेरिफेरीटा रहिला दैट इज कॉल्ड द जोम्बी आइस ओके काहे एटा बहुत फास्ट रेट रे मेल्ट करूची अब काहे कि फास्ट रेट रे मेल्ट करूची बिकॉज़ द कोर एरिया रे बर्तन जो कंटीन्यूअसली फीडिंग होतला ना आइस से फीडिंग बंद हो जाइछि ओके जेतोळे कंप्लीटली इस पेरिफेरी जो साइड रे जो एरिया गुडा अछि जदी एटा धीरे धीरे ता मेल्ट करि जिवो देन कोर भी गोटे पॉइंट आसी से मेल्ट कर जिवो तापर रे हमें देखिबा बहुत अधिक इंक्रीज कर जिवो योर ओशन माने जो हमरो सी लेवल ओके दैट विल बी ए डेट्रिमेंटल इफेक्ट ऑन आवर मैनकाइंड तो गोटे होची आर्टिक रिपोर्ट आर्टिक कार्ड तो आर्टिक रिपोर्ट कार्ड किए प्रोड्यूस करूची किए पब्लिश करूची इट इज बाय NOAA दैट इज द UN माने यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जेंता नास्ता अछि इज रिलेटेड टू द स्पेस साइंस तो सेमती ओशियन रिलेटेड तांकर जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट अछि दैट इज कॉल्ड द NOAA दैट यू शुड रिमेंबर आर्टिक रिपोर्ट कार्ड Next, international conferences, conventions, and initiatives कौन है? So, the first and foremost that is the COP27. तो COP27 से recently हितला UNFCCC रो कोटी हितला इजिप्ट रे हितला शर्म एल शेख तो शर्म एल शेख रे जो हितला शर्म एल शेख ता प्रथम कथा मैप रे लोकेट करियो अछि कोठी एनीवन नो वेयर इट इज लोकेटेड इजिप्ट तो अछि बट इजिप्ट गोटे बड़ कंट्री इजिप्ट मेनलैंड रे नाही इटा ओके इट इज इन सनाई पेनिनसुला it's in Sinai Peninsula. So if you are not marked, then this is your homework. Do Sinai Peninsula रे अच्छी तो ठीक है आपको देखिए because Sinai Peninsula जैसे बड़े जो 6-7 days war ही थिला आसो तो 6 day war ही थिला इज़राइल सहित तो सही समय रे that was captured by your Israel. Okay, और से return back कर दी थिला the sea days because it is a strategically important place. I'm not telling thermal sec is important, but that Sinai Peninsula itself is important. Just once take a glance. मे बी तार रिलेटेड आपनकर बॉर्डरिंग कंट्री भी पचार दी पारे जेमति कि इथरो यूक्रेन रो पचारला बहुत ही इजी क्वेश्चंस सो लाइक दैट तो नेक्स्ट तो COP27 पूर्वरो हमें देखिया COP26 तो प्रथम जिंस COP ता कोन इट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहार UNFCCC रो तोले रियो समिट हेतला रियो समिट रो बहुत गुटे तीनटा प्रोटोकॉल बाहर के आसला UNFCCC UNFCCD UNFCBD तो गोटे होची डेजर्टिफिकेशन को कम्बाट करिया पे गोटे बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करिया पे आ गोटे क्लाइमेट चेंज को कम्बाट करिया पे ताकू छाडला परे माने रियो डिक्लेरेशंस आस्थिला और एजेंडा 21 आस्थिला टोटल पांचटा जिंस बाहर के आस्थिला ओके आ से भी गोटे फाइनेंसिंग करिया पे गोटे फाइनेंसिंग एजेंसी गोटे बाहर के आस्थिला टोटल 6 आउटकम्स रहते इफ यू हैव आई गेस यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग तो ए भितर जो UNFCCC रहिला तार प्रति वर्ष कॉन्फ्रेंस हुई बाकी जो CBD आउ यू कैन से CCC सॉरी आ गोटे कोन रहिला डेजर्टिफिकेशन ପାଇଁ जो रहिला CCD जो रहिला तो एमानकर प्रति 2 वर्ष रे कॉन्फ्रेंस हुई ओके तो दैट्स व्हाई बर्तमान जो 27 कॉन्फ्रेंस हितला एडा इजिप्ट हितला 26 आ पूर्व जोटा हितला सेटा ग्लासगो रे हितला यूनाइटेड किंगडम रो दैट वाज वेरी इंपोर्टेंट काहे कि ए भितर बहुत गुडे जिंस आस्थिला जेमते कि जो ग्लासगो रो जो हितला सेटा फर्स्ट टाइम पई गोटे जिंस आस्थिला इट इज कॉल्ड द फास्ट मूवर कोलिशन सेटा में पढियो फास्ट मूवर कोलिशन कोन हां पंचामृति कथा भी देखिबे सेटा इंडिया रो कंट्रीब्यूशन थिला टू द COP26 रे ओके फास्ट मूवर कोलिशंस कोन थिला आमे देखिया केमती कोन करिया कि फास्ट मूवर कोलिशंस कथा कार्बन मार्केट जो रहिबो तार कोन गाइडलाइंस रहिबो से विषय रे मध्ये बहुत किछि चर्चा हितला सेठी तो इट वाज द फर्स्ट COP26 कथा कोचे जो विषय रे हम फर्स्ट टाइम पई गोटे एक्सप्लिसिट टारगेट एक्शंस अगेंस्ट द फॉसिल फ्यूल जोटा कि हम कहूछु फेज डाउन एबेटेड कोल एंड फेज आउट द इनएफिशिएंट फ्यूल सब्सिडी तो हमें जो अनएबेटेड कोल्स रहिला ताको फेज डाउन करिबा माने कमेइबा अब फेज आउट माने टोटली रिमूव करिबा जते भी सब अनयूजफुल फ्यूल रिलेटेड सब्सिडी दिया होची जेमति आगु देखुते इंडिया रे केरोसिन किनिया पे आपन को सब्सिडी मिलुतला बिकॉज़ माने यू आर गेटिंग केरोसिन एट द सब्सिडाइज्ड रेट आज डेट रे केरोसिन काहे के होने बिकॉज़ केरोसिन रो रेट आज डेट रे 100+ रुपीस रे बिक्री होची सेति तो पेट्रोल मिल जिवो तो पीपल्स आर नॉट बाइंग द केरोसिन सो व्हाट गवर्नमेंट हैज डन गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड द सब्सिडी ओके क्लियर अबाउट दिस so that is what COP27 गला तो COP26 रे हम सेटा देखिथिले COP27 कोन कला जो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हिथिला जो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट रे किछि आउ किछि तार माने फॉलो अप एक्शंस बाकी थिला that was taken up in the COP27 जोटा हायर एम्बिशंस एंड मिटिगेशन एडाप्टेशंस हमें कहूछु एटी आउ भी दीटा कॉन्फ्रेंस हितला जोटा हमें गोटे कहूछु CMP17 आउ CMA4 तो हमें देखिबा CMP कोन CMA कोन COP कोन तीनटा जिंस अछि माने UNFCCC अंडर रे
तीनटा जिनस आसे गोटे कप गोटे CMA आउ गोटे होची CMP ओके तो CMA होची कोन जो पेरिस रो केते नंबर कन्वेंशन एटा ओके तो इट इज द पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट जेते जण पेरिस एग्रीमेंट रो पार्टीज अछंती सेही मानको गोटे अलगा कॉन्फ्रेंस रे दैट इज द CMA आउ CMP कोन एटा होची क्योटो वाला जो क्योटो प्रोटोकॉल थिला सेही मानको जो माने सिग्नेटरी थिले सेही मानकर कॉन्फ्रेंस दैट इज द 70th कॉन्फ्रेंस ओके दैट यू शुड कीप इन योर माइंड ए भितरे कोन टारगेट आसला सब एसु नॉर्मल से जिंसो बेसी हमें पढ़ी की मन रखिया कैंडिडेट म्यूट कर सो इट इज कॉल्ड गोटे तो हमें एडाप्टेशंस कथा कहूचे क्लाइमेट फाइनेंस कथा कहूतले अवॉइड करिवो बैक स्लाइडिंग के करिवो माने सपोज गोटे कंट्री किछि माने एजेंडा देछि बा किछि प्लेज देछि आ पछकु फेरी जाउछि से दैट वी शुड रिमूव माने वी शुड अवॉइड नेक्स्ट किछि प्लेज हमें नबा से शिफ्टिंग फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशंस एट द स्केल एंड ऑन द टाइम ओके केते समय केते परिमाण रे हमें ताको इम्प्लीमेंट करिया ता विषय में प्लेजिंग नबा तो इसु नॉर्मल से जिंस थिला किछि विशेष जिंस नाही तो क्योटो विषय टिके देखिया क्योटो प्रोटोकॉल 1997 रे फर्स्ट टाइम पे साइन हितला बट फोर्स को असला 2005 रे फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दीटा अछि फर्स्ट फेज ला 2008 ରୁ 2012 और सेकंड फेज होछि 2012 ରୁ 2020 ओके क्योटो प्रोटोकॉल जो टारगेट थिला इट वाज फिक्स टारगेट बट एटा समस्त को पई एप्लीकेबल नथिला से भितर NX1 NX2 कंट्री करके डिवाइड करा हेतला डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्री लाइक दैट बट जेतले पेरिस असला ए भितर कोन से फिक्स टारगेट रखा गलानी सेडी गोटे टर्म नै के असले दैट इज कॉल्ड द INDC ओके तो INDC सबु कंट्री किछि किछि टारगेट रखिबे ओके सेटा को हम त कोचो स्टॉक टेक बट से माने सबु कंट्री किछि किछि निजरो टारगेट देबे दैट इज द स्टॉक टेक एंड द स्टॉक टेक इज बाइंडिंग इट इज कॉल्ड द पेरिस एग्रीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल डिफरेंट थिला ठीक अछि क्योटो प्रोटोकॉल सेति में पेरिस को नै कि माने पेरिस कोन कहूची कि माने समस्तिंकर रिस्पांसिबिलिटी अछि बट इक्वल बट डिफरेंशिएटेड दैट इज द अप्रोच ओके इक्वल डिफरेंशिएटेड माने कोन एमपी नाही जे गोटे डेवलपिंग कंट्री अच्छी तो ताको छूट मिल जाए कथा ताको भी क्लाइमेट एक्शन रे कंट्रीब्यूट करियार अछि बट दोस कंट्री दोस आर ऑलरेडी डेवलप्ड जो माने ऑलरेडी एमिशन करी सारी चंती बहुत पास्ट रे तो सेमान को रिस्पांसिबिलिटी अधिक rather than the one country that don't have that much of finances so that is the approach UNFCCC रो किछि इंपोर्टेंट कॉन्फ्रेंस देखिया फर्स्ट टाइम पे 1992 रे हितला नेक्स्ट 1994 रे से एनफोर्स को आसिला 1993 रे तार फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हितला बर्लिन तार हेडक्वार्टर नेक्स्ट 1997 रे थर्ड कॉप हितला जोटी क्योटो प्रोटोकॉल आसला बट इंप्लीमेंट हितला 2005 रे में देखिले 2002 रे जो हितला सेटा इंडिया रे हितला दैट वाज द 8th न्यू दिल्ली रे 2015 रे जो 21 नंबर सेटा होची पेरिस एग्रीमेंट विद नो 2021 रे 26 हितला जोटा ग्लासगो यूके रे रिसेंटली सर्मेल सेट रे हितला तो एड्रो माने आर जदि हमें आउटकम्स देखिबा 27 रो तो कोन क्लाइमेट टारगेट्स हमें देलु कि सब कंट्री निजरो जो टारगेट्स रखिसंती 2030 सुधा जहा अचीव करे जेमति इंडिया निजो टारगेट रखछि हमें कोन करिबा कहि कि तो निजो टारगेट को समस्त रिविजिट करिवे अर्थ कोन देखिबे जे तांको टारगेट गुडा को माने से माने ठीक भाबरे काम करछन टारगेट अचीव करिया पई ना से माने डिरेल ही जइछंती दैट दे शुड वंस टेक इनटू कोग्निजेंस नेक्स्ट एडाप्टेशंस कथा कहितला माने ग्लोबल गोल ऑन द एडाप्टेशंस एटी ग्लासगो और सर्मल सेक दीटा कर मिसे की गोटे वर्क प्रोग्राम हबो जोटा कि नेक्स्ट जो कॉप हबो सेठी प्रॉपर डिस्कस करब तो दैट इज नॉट वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस ए जगह रे गोटे न्यू प्लेज असला कि तो माने से माने कोन करिवे मोर देन 230 मिलियन रो कंट्रीब्यूशन से माने रेज करिवे दैट वाज द आउटकम कॉप 27 रे लॉस और डैमेज कथा गोटे असला लॉस डैमेज रो अर्थ कोन क्लाइमेट चेंज फल रे जदि कहार भी को कंट्री रो को पर्टिकुलर एस्टाब्लिशमेंट रो किछि लॉसेस हो जे बा किछि डैमेज से मन एनकाउंटर करछन इट वाज बिकॉज़ इफ इट इज रिस्पांस इफ इट इज ए आउटकम ऑफ योर क्लाइमेट चेंज देन ताकू माने ताकू रिजॉल्व करिया पे गोटे फ्रेमवर्क अछि दैट इज कॉल्ड द सेंटियागो नेटवर्क ओके सेंटियागो नेटवर्क एडा केबे असला कॉप 26 रे ही आस्तिला इट प्रोवाइड्स द टेक्निकल माने किछि प्रकार टेक्निकल माने सपोर्ट प्रोवाइड करिवो फॉर द लॉस एंड द डैमेजेस ओके एटा टिके मन रखिबे बिकॉज़ बेडा हम भूली जबा छोटो जिंसटा सेंटियागो नेटवर्क तो सेंटियागो नेटवर्क लॉस एंड डैमेज सहित रिलेटेड अछि केबे आस्तिला कॉप 26 रे आस्तिला टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करिवो ओके लॉस ऑफ डैमेजेस बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज एनर्जी कथा मु कहितली ऑलरेडी दी प्रकार जिंस गोटे फेज डाउन एंड फेज आउट फेज डाउन माने कम करिबा अनअफेक्टेड कोल कथा कहउछु एडी कोल पावर माने अनावश्यक हमें थर्मल पावर प्लांट्स आउ जनरेट करिबा नाही if possible we are going to move towards the renewable energy that was the thing then phase out
inefficient fuel subsidy मु kerosene रो example देखि बुझेथि आपन को आ गोटे important जिंस you should remember agriculture related गोटे कोरोनिबा जॉइंट वर्क एग्रीमेंट गोटे अछि ताको आउ 4 वर्ष रो लीज दिया गला माने एटा खत्म हो जाउतला सरी जाउतला ताको आउ 4 वर्ष पर्यंत एक्सटेंड करा गला एटा कोन केजेडब्ल्यूए एटा होची गोटे ही एमटी प्रोग्राम जोटा कि यूएनएफसीसीसी अंडर रे आसुची जहा काम होची एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पाई मध्ये टारगेट करछि तो इट इज समथिंग इफ इट इज बीइंग आस्क्ड इन ए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हमें ताको रिजेक्ट ही करियो that you should take in माने सेठी पे आपण मन रखिया दरकार because UNFCCC is something we know it is related to climate change जोटा कि ग्रीन हाउस गैस सहित रिलेटेड तो काहे कि UNFCCC अंडर गोटे एग्रीमेंट आसीबो गोटे फ्रेमवर्क आसीबो जे कि एग्रीकल्चर ऑफ फूड सिक्योरिटी ऊपर काम करबो तो we may take it as a wrong statement but you should take it माने in your mind it is not a wrong statement तो एटा UNFCCC अंडर गोटे मात्र एमती प्रोग्राम रन करछि जोटा कि एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पाई ठीक अछि Just one second. तापरे आउ कोन आस्थिला फर्स्ट कॉप जोटा कि कॉप 27 दैट इज जोटा कि फूड विषय मेंशन करथिला रिवर विषय मेंशन करथिला नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस कथा कहितला दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज समथिंग हैज डन लाइक दिस ओके सॉरी मोर पेन रो चार्ज से दैछि बट वी विल डिस्कस नो इश्यूज पेन तो दरकार भी नहीं सो दैट इज व्हाट तो ये बहुत गुड जिनस फर्स्ट टाइम पे मेंशन कला केबे कॉप रे इसो मेंशन हि नथला जेंति फूड रिवर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन टिपलिंग पॉइंट्स कोन रहिबा दरकार तो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट इसो विषय डिस्कस कराइतला फर्स्ट टाइम पे ओके तो किछि रिलेटेड डेवलपमेंट्स जोटा कि कॉप 27 रो फर्स्ट टाइम पे हमें कोन कोछु ब्रेक थ्रू एजेंडा कथा कोटे तो ब्रेक थ्रू एजेंडा कोन 2006 माने कॉप 26 रे ही आसेतला ब्रेक थ्रू एजेंडा by the coalitions of 45 world leaders India is also a signatory तो breakthrough agenda रो India is a member that we should remember तापर आसला फास्ट मूवर कोalition जो मु कहथि फास्ट मूवर कोalitions कोटे आसला COP 26 रे कोन कहउतला यूएस और ईयू माने सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दी जण को कंबाइन एफर्ट रे लॉन्च हितला ग्लासगो रे ही सेमान कहिबा कोन थिला एमिति सातटा सेक्टर अछि दैट इज कॉल्ड द हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रियल सेक्टर माने सातटा एमती सेक्टर अछि एमते कि एल्युमिनियम सेक्टर हला एविएशन सेक्टर केमिकल सेक्टर देन कंक्रीट सेक्टर शिपिंग स्टील ट्रकिंग सेक्टर ए सब सेक्टर अछि जो माने कि 30% एमिशन पे रिस्पांसिबल केवल सातटा सेक्टर ताको हमें हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रियल सेक्टर कोच ए सेक्टर्स रे जदि हमें इंप्लीमेंट करि पारले हमरो कार्बन न्यूट्रल हो पे सोटू फर्स्ट रे तो हमें जीरो जो कार्बन जीरो माने नेट जीरो एमिशन रो जो टारगेट अछि ताको हम इजीली आउ टाइम बाउंड मैनर रे रीच कर परिबे बुझि परछन सो दैट इज द फास्ट मूवर कोalition तो क्वेश्चन में आस्क्ड फास्ट मूवर कोalition रिलेटेड टू व्हिच कॉप द कॉप 27 कॉप 25 कॉप 26 ऑफ फास्ट मूवर कोalitions कोन यू शुड बी एबल टू रिमेंबर ओके नेक्स्ट फास्ट मूवर कोalitions कोन थिला इट्स ए लार्ज आउट फास्ट मूवर कोalitions परे आउट असला क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड एटा होची लार्जेस्ट मल्टीलेटरल क्लाइमेट फंड हमें कहूछु 72 मल्टी और लो middle or low income countries partnership rate create that's all UNFCCC कहि दी ऑलरेडी रियो रु आसला 1992 तार को कॉन्फ्रेंस को पार्टीज एगुडा हम कहितली कॉप कथा CMP कथा और CMA कथा whatever I have told that much if you remember that will sufficient for your examination क्योंकि सब इंफॉर्मेशन से मॉकअप करे पॉसिबल न हो what is important for your examination that we are supposed to remember next India's long term low emission development strategy एटा कोन इंडिया ही माने एरा एजेंडा कोन कोची LT LEDs मैं कोछु द पार्टी UNFC एटा ना जेमति हमें कहितले INDC तो INDC केबे आस्तिला पेरिस रे आस्तिला समस्त सब कंट्री निजरो गोटे INDC जणेबे UNFCCC को कि निजे केते कंट्रीब्यूट करिवे क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करिया पे सेमिति इंडिया रिसेंटली कोन कोची जदि आपण देखिबे इट इज रिटन India has submitted its long-term low-emission development strategy, जोटा कि हमें LT-LED कहूँ, UNFCCC को recently submit करछि। एटा कौन? तो एटा जो देखो तो parties to the UNFCCC agreed करथिले कि LT-LEDs Paris Agreement under रे सेमाने submit करिवे। Okay, it is something related to the Paris Agreement. It is similar kind of INDC. Okay, से भितर कौन कौन रहिबो that is not very important.
एगुडा तार टार्गेट्स अछि जेमते हमें कहूछु लो कार्बन डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड एफिशिएंट इंक्लूसिव कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कथा हमें कहि परिबा नेक्स्ट एडाप्टेशंस इन द अर्बन डिजाइन कथा इकोनॉमी वाइड डीकपलिंग ऑफ द ग्रोथ माने हमें कोन कहूछु इन जनरल मन भितर गोटे जिंस अछि इकोनॉमी बढ़ुची तार तो क्लाइमेट चेंज भी बढ़िबो बट इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट जदि हमें सस्टेनेबल वे रे इकोनॉमी को बढ़ाउछु तो कार्बन न्यूट्रल भी ही परिबो so that can also be possible carbon dioxide removal केमती ही परिबो enhancing the forest ये सब जिंस अछि but not important very माने point by point you should not remember everything okay just broad जदि किछि देखिया को चाहिबे you can go through that जेमति कि किछि किछि जिंस अछि I will be telling you once just a second पेन टा टिके चार्ज हेले हां लेट्स डू तो सी फर्स्ट थिंग यदि हमें देखिबा एनडीसी इंडिया रा टारगेट is it visible टिके छोटो अछि लेट अस now is it visible तो Yes, sir, कार्बन visible. टारगेट there are 50% हमें नॉन फॉसिल फ्यूल रो हमें पावर जनरेट करिया बाय 2030 एटा इंडिया रा गोटे टारगेट ओके एटा केतोल ही परिबो इंडिया 3 फोल्ड इंक्रीज करियो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बाय 2032 it is one target India has given okay second 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करियो एटा टारगेट हमर अछि बाय 2025 प्रथमे 2023 थिला परे हमें ताऊ कमी की 2025 कल बाकी सब एते इंपोर्टेंट नुहो जोटा इंपोर्टेंट मु कहिबी हां अगेन आ गोटे होची एडिशनल कार्बन सिंक हमें क्रिएट करिया 2.5 टू 3 बिलियन टन रो बाय 2030 तार अर्थ कोन बुझछन 2.5 टू 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट कार्बन सिंक हमें कहा को एमती गोटे जिंसो जे कि कार्बन को कैप्चर करके निजे पाखे रखे जेमती कि हमें गछ ओशन जो कार्बन कैप्चर करे हाँ केवल ओशन हो प्लांटेशंस हो जो भी टाइप रे एमती टाइप रे जोटा कि कार्बन मैनग्रोव्स हो ठीक अछि जनरली फॉरेस्टेशन थ्रू माने हम जदी एफॉरेस्टेशन आउ रिफॉरेस्टेशन करि पड़ुछे बिकॉज़ डिफॉरेस्टेड मेनली फॉरेस्ट कवर रिलीज करिया पर जो कार्बन गुडा को माने कैप्चर कर रखले दैट वाज रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट वी आर टेलिंग लाइक दैट तो हमें जदी सेति की आउट रीग्रोथ करि परिबा देन that much of carbon sink again we can create तो इंडिया रा टारगेट होची बाय 2030 2.5 टू 3 बिलियन टन रो एक्स्ट्रा कार्बन सिंक हमें क्रिएट करिबा ओके एगुडा को मन इथमे रखिबे बिकॉज़ नॉट ओनली फॉर द प्रीलिम्स बट फॉर द मेंस राइटिंग whenever you are writing something india's contributions towards your or the steps taken by the india towards mitigating the climate change so you can put it in a very good way okay you are getting good you will fetch good marks ठीक अछि दैट्स ऑल बाकी हमें देखियो हम जोटी दरकार पड़े हम देखियो लाइफ मिशन मोइडी स्किप करछि बिकॉज़ आ तळे लाइफ मिशन अछि दैट विल बी सीन नेक्स्ट 50 इयर्स ऑफ द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हमें स्टार्टिंग ही करले स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस विषय स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस काहे कि असला बिकॉज़ लंडन रे फर्स्ट टाइम गोटे स्मॉग दिखाइतला 1952 रे से समय से बहुत कॉन्शियस हो गेले कि एमती कोन होउची तो आफ्टर दैट बहुत गोटे माने तार प्रिपरेटरी फेज वगैरह थिला फाइनली 1972 रे गोटे कॉन्फ्रेंस थिला दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट यू शुड रिमेंबर दिस नेम आल्सो बिकॉज़ समटाइम्स इन एग्जामिनेशंस दे विल बी गिविंग इन ऑप्शंस ए टाइप ऑफ ऑप्शंस देथिबे ओके 1972 रे वी नो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस बट दैट नेम इज दिस जेमते में रियो कॉन्फ्रेंस को तो रियो कॉन्फ्रेंस इज नॉट रियो कॉन्फ्रेंस तार प्रॉपर ना अछि so similarly you should remember this it is the united nation conference on human and environment okay तो से एबे जदि हमें देखिया स्टॉकहोल्म 50 रो किछि गोटे थीम आछि बिकॉज़ 50 इयर्स कंप्लीट हे गला द थीम कोन ए हेल्दी प्लैनेट फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल आवर रिस्पांसिबिलिटी एंड आवर अपॉर्चुनिटी ए थीम सहित हमें सेलिब्रेट करथिले स्टॉकहोल्म रो 50 इयर्स ओके स्टॉकहोल्म में से जिंस कोन आसला गोटे स्टॉकहोल्म माने स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस रे गोटे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आसला से जिंस कोन ह्यूमन कैन यूज एनी सब्सटेंस ओनली व्हेन इट इज प्रूव टू बी सेफ जतो बडे प्रूफ ही जीवो जे गोटे सब्सटेंस को यूज करले तो इट इज कंप्लीटली सेफ देन ओनली ह्यूमन कैन यूज इट तो अपन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहि गोटे आउटकम विथ रेस्पेक्ट टू द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस मु जो कहली केमती कोन आसला दैट्स नॉट दैट इंपोर्टेंट तो जो 1972 रे स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ही थिला तारो जहां भी से माने पेपर रिलीज करथले इट वाज अंडर द हेडिंग ओनली वन अर्थ 122 कंट्रीज ताको डिक्लेरेशंस को साइन करथले से स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस रो डिक्लेरेशंस को से समय हमर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मध्ये पार्टिसिपेट करथले से प्रोसेस रे ए सब किछि मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स अछि आई गेस
you are aware of this. If not, you should know 1971 रो रामसर कथा कहूँ रामसर विषय डिटेल हमको जानिया दरकार 1972 रे कॉन्फ्रेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज कथा हमें कहूँ 1973 रे साइट्स आस्तिला साइट्स रो काम कोन ए जो एंडेंजर्ड स्पीसीज को endangered species रो ट्रेड्स को चेक करिवो not only plants but also sorry plants ଆଉ flora and fauna दीटा पर ठीक अछि then 73 और 78 भितरे मार्पोल आस्तिला मार्पोल कोन एटा प्रिवेंशंस करिवो जो शिप थ्रू रे जो टाइप रो इट इज द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशंस फ्रॉम द शिप्स ओके ए भितर गोटे टर्म्स आसीबो दैट यू शुड रिमेंबर बालिस्ट वाटर कहि कि ओके सेटा बिटे देखियो व्हाट इज बालिस्ट वाटर যদি জানিছেন বহুত ভালো কথা নাই যে দেখিবে টিকে দেন 1979 রে বিকজ কিছু জিনিস তো এক্সপেক্ট করছি আপন সমস্ত টিকে দেখিবে কই বিকজ ইজিলি মিলি যাবে এগুলা 1979 রে লং রেঞ্জ ট্রান্স বাউন্ডারি এয়ার পলিউশন আসলে এতে ইম্পর্টেন্ট 1985 ইট ইজ মুझे কইলে কনভেনশনস প্রথমে আসলা তার প্রপোজ আসলা মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল কইকি যে কি ওজোন লেয়ার को টেক করিয়া পে হেছি এই টাইম রাম কনভেনশন আসলা স্পেশাল কনভেনশনস কোন প্রিভেন্ট অফ द हाजर्डस वेस्ट যেটাকে বাউন্ডারি ডিসপোজাল করি পাইবা নাই सपोज किसी वेट खोला जोटा कि हाजरस अछि आसी आनी कि इंडिया रे डॉक अफ्रीकन कंट्री रे ड्रम एमती कोरु थिली ओके टू चेक दैट दिस केम इनटू पिक्चर इट इज वेरी इंपोर्टेंट वन ऑफ द इंपोर्टेंट जिंस जोटे जो मु पॉइंट करली ता भितरे बेटा जेंति कहला को अपन छाडी परिबे ते प्रॉब्लम नेक्स्ट डाइवर्सिटी 92 फॉर्मेशन एटा तो हमें जानि छु जो सीबीडी कथा कहले क्लाइमेट चेंज कथा कहले डेजर्टिफिकेशन कथा कहले रियो रु जो आसीथिला तापरे रोटरडैम कन्वेंशन दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपोर्टेंट जोटा कि हमें कहू हाजर्डस केमिकल जतबले इंटरनेशनल ट्रेड होउची रोटरडैम कन्वेंशन थ्रू रे तार प्री इंफॉर्मेशन तो पड़िबो ओके एमति नै जे को कहउछन पहले किछि फर्टिलाइजर्स नै कि आसु कहे कि से भितर आउ किछि हार्मफुल सब्सटेंसेस अछि एंड दे आर नॉट इन्फॉर्मिंग टू द importing country they have to inform that is the rotterdam convention देखिए थोड़े okay I am telling from my past knowledge so detail you should see once next it's not that important next which is stockholm convention जो pop कथा कहथली pollutant persistent organic pollutant then minamata conference is very important जोटा कि mercury related अछि okay जो इंडिया रे सी इंडिया रे गोटे एक्ट अछि दैट इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जोटा को अम्ब्रेला एक्ट कहूछु हमर आ गोटे पॉलिसी आपण सुनथिबे EIA एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट तो एटा ए EIA एक्ट अंडर गोटे पार्ट तो 2005 रे नोटिफाई कराला EIA ता पूर्वरु थिला बट इट वाज फॉर द लिमिटेड सेक्टर 2005 परे माने ब्रॉडली ताको नोटिफाई कराइला कमिंग टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जोटा में स्टार्टिंग रे डिस्कस करी भी थिले व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ODS को ये बैन करथला 1987 रे आसीथिला वियना कन्वेंशन रो गोटे आउटकम कहले चले हमको जो ODS थिला जेमति कि क्लोरीन ब्रोमीन नाइट्रोजन ऑक्साइड ए सब को डाउन करिया पे किंतु ए बेते हम कोन कहथले HFC पार्ट नथिला तो HFC को पुणी आउथरे एबेट करिया पे ताको कम करिया पे बट वी केम अप विथ द किगाली एग्रीमेंट जोटा कि 2016 रे आस्थिला ओके और 2019 में फोर्स को आसिला ओके तो एटा से लिखाई छी CFC को हमें HFCs रे हमें रिप्लेस तो कर देले किंतु HFCs परे जानले जे से गोटे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखुची सो दैट्स व्हाई वी अगेन वांट टू रिप्लेस HFC तो ए जो किगाली टारगेट रहिला किगाली टारगेट तीनटा फेज रे अछि माने डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज अछंती किछि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप जोने फर्स्ट ग्रुप होचनी 2018 से माने काम करिया स्टार्ट करथिले तांकर HFC को कम करिया पे 2024 रे आ गोटे ग्रुप रहिले से माने काम करिया स्टार्ट कले HFC कम करिया पे इंडिया टाइप रो कंट्री जोटा 2028 रु टारगेट रखिछन इट इज रिटन ओवर हियर इंडिया कौन कला 2021 रे किगाली एग्रीमेंट को रेटिफाई कला माने आम गवर्नमेंट ताको इंप्लीमेंट करिया स्टार्ट करिवो कहि कि आमे नोटिफिकेशन जारी कर तो इंडिया को फेज आउट करिया दरकार यदि बाय 2028 यदि हम HFC एमिशंस को 15% कट करिया अछि 2024-26 लेवल रो बाय 2047 ओके 2047 यू हैव टू ब्रॉट इट डाउन बाय 15% ऑफ 2024-25 24-26 लेवल ओके सो वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्क बाय तो हमें थर्ड स्टेज रे फॉल करछु मॉडल प्रोटोकॉल विषय रे डिटेल कहि दिछि आई एम नॉट गोइंग अगेन एटा ही लिखाइ छै जेमते हम कहले 10% जो ओजोन रहिला 10% ओजोन यू कैन फाइंड इन द ट्रोपोस्फियर दैट इज कॉल्ड द बैड ओजोन बाकी 90% यू कैन फाइंड इन द स्ट्रेटोस्फियर दैट इज द गुड ओजोन
ठीक बैड ओजोन तो प्रॉब्लम अछि जेंति हमें यूवी रेज को यूवीए यूवीबी यूवीसी तीनटा अछि यूवीए इज नॉट बैड यूवी बी टा ठीक अछि ओके आउ एटा को ही हम स्ट्रेटोस्फियर ब्लॉक कर दोछ असीमा किछि कहउछन कि नो सर वॉइस टिके ब्रेक ही जाइतला तो सब हाँ ठीक अछि नो इश्यूज तो जेमति एते डिटेल काम भितर को पसियन बिकॉज़ इट इज नॉट आउथोरिटी हाँ मु कहली यूवी यूवी टोटल तीन प्रकार अछि गोटे यूवी ए लाइट यूवी ए रेज यूवी बी रेज यूवी सी रेज ओके यूवी ए रेज कोन जोटा यूवी ए इज नॉट हार्मफुल यूवी बी भी इज नॉट दैट हार्मफुल बिकॉज़ एगुडा को आम पई हेल्पफुल कहले तळे जेंति यूवी बी हम विटामिन डी मिलुची ओके बट यूवी सी जोटा दैट इज हार्मफुल जोटा कि हम स्किन कैंसर क्रिएट कराए ताकू ही एब्जॉर्ब कर दी ए जो स्ट्रेटोस्फियर जो ओजोन लेयर अछि दैट वाज इट जेतोले सीएफसीज मॉलिक्यूल आमे रिलीज करछु से कोन करे कि ए जो ओजोन सहित रहला O3 कंपाउंड सहित ता सहित रिएक्ट करे कि ताको ताको डिवाइड कर दिए गोटे O2 और O ओके माने रेडिकल O बट सिंगल माने एटम O और O2 रे कन्वर्ट कर दिए तो व्हाट विल हैपन आउ से ताको ब्लॉक करि परिबो नै थिनिंग ही जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जदि मॉन्ट्रियल रे इति अपन मन रखछन इट विल सफिशिएंट फॉर यू adoption unit वगैरह ये सब लिखा है you can just go through once if you really want तापरे ओशियन कॉन्फ्रेंस यूएन रो गोटे ओशियन कॉन्फ्रेंस होची सेकंड यूएन कॉन्फ्रेंस हेतिला कोटे केनिया आउ लिस्बन मिसिकी करथिले बट हेतिला सेठी लिस्बन रे केनिया आउ पोर्चुगल मिसिकी करथिले ओके तो प्रतिथर ना ओशियन कॉन्फ्रेंस दीटा कंट्री मिसिकी करिवे एटा सेकंड कॉन्फ्रेंस हेतिला लिस्बन रे केनिया और पोर्चुगल मिसिकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो हेतिला तार दीटा कंट्री मिसिकी करथिले फिजी और स्विट्जरलैंड मिसिकी करथिले बट तार हेडक्वार्टर रे करथिले यूएनओसी जो अछि यूएन यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस तार हेडक्वार्टर अछि न्यूयॉर्क सेठी करथिले फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ता ओके ऑब्वियसली कौन करिवे जो ओशियन रो कोन सिग्निफिकेंस अछि कोन प्रॉब्लम अछि ओशियन पॉल्यूशंस वगैरह होछि ओशियन लेवल राइज करछि तो ए सब को हमें केमिति टैकल करि परिबे ता विषय डिटेल डिस्कशंस होबो इंडिया इज आल्सो पार्टी टू यूएनओसी ओके तो इंडिया रो किछि भी कंट्रीब्यूशंस अछि सेठी कोन डिस्कशंस हेतला कोस्टल क्लीन सी कैंपेन कथा कहउतले जा फल रे कि हमें बैन करिया सिंगल यूज प्लास्टिक ऑलरेडी इंडिया ए स्टेप नै सारिछि इंडिया रो सेम स्टेप कोन ताको रीनेम कर देला इंडिया स्वच्छ सागर एंड सुरक्षित सागर कहि जा थ्रू रे हमें 75 बीच को क्लियर करिया इन 75 डेज सेमति हम अमृत महोत्सव थ्रू रे हम एटा को सेलिब्रेट करूची ओके जदि यूनाइटेड नेशन यूएन सॉरी यूनेस्को जदि कथा यूनेस्को मध्ये गोटे रिपोर्ट पब्लिश करे इट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट एटा रिपोर्ट पब्लिश करे ना पब्लिश करिथिला फर्स्ट टाइम पे ए कॉन्फ्रेंस में बर्तन देखिबा इनोवेशन रोड मैप of the mission integrated biorefineries see ए biorefineries ता कोट आसला प्रथमे हम देखिया पड़े एमआई विषय मिशन इनोवेशन कोन एटा गोटे ग्लोबल इनिशिएटिव थिला टू catalyze actions and investment in the research development demonstrations to make the clean energy affordable सिंपल कथा बुझी पारे एटा गोटे ग्लोबल यू कैन से कोअलिशन जा फल रे कि जो क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी अछि ताको हमें अफोर्डेबल केमति करिया जेमि हमें कहू कि सोलर एनर्जी इज एक्सपेंसिव बिकॉज़ सोलर पैनल आनिबे ताको इंस्टॉल करबे इट इज ए इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई सो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट so what initiatives what type of science and tech what type of research what type of other initiative or financing provision that should be implemented so as this green energy can be affordable तो आपको आप गोटे इंटरनेशनल मिशन इंटरनेशनल कोअलिशन अछि that is called the MI mission innovation India is a member okay ए भितरे 22 टा कंट्री अछंती consist of 22 countries and EU India is a founding member you can say ए भितरे the first phase of the mission केबे लॉन्च करा हितला पेरिस एग्रीमेंट 2025 रे लॉन्च करा 2015 रे लॉन्च करा हितला ओके सेकंड फेज होची कोन मिशन इनोवेशन 2.0 जोटा कि 2021 रे आउथर लॉन्च करा तो फर्स्ट फेज 2015 सेकंड फेज 2021 ओके मिशन इनोवेशन जो अछि 87 टा मिशन अछि ओके ए 17 मिशन रो गोटे मिशन होची इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी ओके दिस इज इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी जा विषय रे हम न्यूज़ देछि ओके ए भितरे क्लीन हाइड्रोजन कथा कहूची ग्रीन पावर फ्यूल कथा कहूची जीरो एमिशन शिपिंग कथा कहूची कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस केमते हेबो नेट जीरो इंडस्ट्री केमते हेबो देयर आर 7 पॉइंट्स इन दिस एवरीथिंग वी आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर आमे पता जानिबा जे दिन छोटा आसला कोटो मिशन इनोवेशन रो आसला आ ता भितरे हमें देखियो ओके
बेसी जिनस तो हम देखिबार नाही जेमति कि इंडिया अनाउंस करथिला इनोवेशन रोड मैप ऑफ मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज कोठी अनाउंस करथिला ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम एटा गोटे ग्लोबल फोरम क्लीन एनर्जी पई तो सेही फोरम रे जेतोले कॉन्फ्रेंस होतला इंडिया निजरो रोड मैप कोन रहिबो इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज पई तो सेही विषय इंडिया अनाउंस करथिला दैट वी शुड रिमेंबर ओके तो एथरो जो आमे कोन कहूचे हां मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज रो 7th मिशन 7 मिशन भितर गोटे मिशन ओके तो 2022 रे लॉन्च करा हितला आपको को लीड करछन कि इंडिया और नीदरलैंड वन लाइनर वगैरह जीके टुडे वगैरह देखिए बट मे भी बुझी परिवेनी तो दैट्स व्हाई to develop and demonstrate goal kono develop and demonstrate innovative solutions to accelerate the commercializations of the integrated biorefineries अर्थ बुझिजन बायोमास रु वगैरह रु जो हमें एनर्जी जनरेट करूछु तो that is biorefinery process माने करिया to replace 10% of fossil fuel ताको हमें बायोफ्यूल रे हमें रिप्लेस करिया बाय 2030 इट इज अनदर स्टेप दिस इज आल्सो यू कैन रिमेंबर एटा भी अपन मेंस वगैरह रे आंसर राइटिंग रिपोर्ट करथिबे इंडिया रा स्टेप टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज ओके कमिंग टू नेक्स्ट वन दैट इज द मिशन लाइफ कहितले लाइफ कथा एटा फुल फॉर्म होची लाइफ फॉर एनवायरनमेंट तो एटा कोन हितला प्राइम मिनिस्टर ताको अनाउंस करथिले मिशन लाइफ कहि के जेतबेले स्टैच्यू ऑफ एट द कवड़िया गुजरात रे से आपको अनाउंस करथिले ए कोन एटा सिंपल कोटेंस एटा कोनसी स्कीम हो एटा कोटी टाइप रो समस्त को एडवाइस जे यूथ वगैरह जो हमर रहिछु हमें को टाइप रो अप्रोच रखिया दरकार सो एज वी कैन हैव ए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दैट वाज जेमति कि हमें कहू तीनटा फोल्ड रे फर्स्ट चेंज द डिमांड हमें कोन डिमांड करछु दैट वी शुड चेंज जेमति कि एमति किछि जिंस डिमांड करिया जहार प्रोडक्शन रे बहुत होते एमिशन होची दैट वी शुड नॉट डू नेक्स्ट चेंज इन द सप्लाई skeleton sorry stockholders to respond and tailor the supply and procurement as per the revised demand तो बर्तमान फास्ट सेंस हो हमें चेंज कर देले डिमांड ओके तो हमें सपोज बर्तमान एमसी कोनसी कार्बन यू कैन से हाई कार्बन एमिशन वाला जिंस हमें डिमांड करू बर्तमान सेम जिंस आपन को प्रोड्यूसर जो रहिले जो सप्लायर्स रहिले से माने मते तांकर सप्लाई साइकिल को सेमती चेंज करा दरकार सपोज गोटे प्रोडक्ट अछि लेट्स से देयर इज अ मोटरसाइकिल दैट वाज जनरली पीपल आर हैविंग हाई डिमांड बट सेम मोटरसाइकिल बहुत अधिक एमिशन तो फर्स्ट जिंस हमें हम डिमांड को चेंज कले कि हमें से मोटरसाइकिल भलो लागले हमें ताको यूज करिबा नाही तो जेहेतु तार माने डिमांड नाही तो सप्लाई साइड रे मध्ये स्टेक होल्डर्स जो रहिले से माने मध्ये ताको चेंज करिबे दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर मोटर बाइक ओके नेक्स्ट फाइनली हमें कहू चेंज इन द पॉलिसीज पॉलिसी कोन ट्रिगर द शिफ्ट इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू सपोर्ट द सस्टेनेबल बिकॉज इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी चेंज करिबा और गवर्नमेंट रो पॉलिसीज को मध्ये चेंज करिया सो दैट वी कैन हैव ए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट ओके कॉन्सेप्ट एडा पीएम मोदी इंट्रोड्यूस करथिले यूएनएफसीसीसी ग्लासगो समिट समय रे टारगेट कोन कहथिले 1 बिलियन इंडियंस एंड ग्लोबल सिटीजन कंट्रीब्यूट करिया दरकार 2022 रो 2027 से टाइम फ्रेम दिखले ता भितरे ए एडेप्टेबिलिटी हमें नेकी आसीबा तो विदिन इंडिया 80% ऑफ ऑल द विलेज एंड द अर्बन लोकल बॉडीज एम टू बिकम द एनवायरमेंटल फ्रेंडली बाय 2028 यदि हमें ए जिंसटा निज भितरे जो एटीट्यूडनल चेंजेस आनी परिबा देन वी कैन कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शंस इन द क्लाइमेट चेंज ओके इंप्लीमेंट किए परिबा तार जो इनिशियल इयर्स रे इंप्लीमेंटेशन इट इज बाय द नीति आयोग टू क्यूरेट एंड इंक्यूबेट फॉर द फर्स्ट ईयर किंतु सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स इट विल गो टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज ओके दैट यू शुड रिमेंबर ताको से कोन कहितले जो ए टाइप ऑफ लाइफस्टाइल ने की बंची पारिबो देन दे विल बी कॉल्ड द प्रो प्लैनेट पीपल दैट इज कॉल्ड द P3 ओके सो दिस मच वी हैव डन कौन करिए आगो कंटिन्यू करिए अदरवाइज ओके विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम दिस आज सब ये करे कि जीके टुडे हाँ सर आपण पढ़िया पई कहिथिले ना सर टास्क देथिले सर पढ़ी करे ओके ठीक है लेट्स आस्क कौन से क्वेश्चन Yes. ओके ठीक है व्हाट इज इट अच्छा
एप्रिल तो कम थिला केते थ्रो कर देथिले हमें 210 हाँ हाँ 210 या ही ओके 210 जाइतला 211 रोंगला फेस्टिवल आसाम रो कोटा नहीं हां एटा कोन थिला 213 मैग्नेटोपोज ओरिजे एटा कोन थिला फंगस थिला इट इज अ फंगस ओके तो एटा कोन करछि व्हीट को डिस्ट्रॉय करछि डिस्ट्रॉइंग द व्हीट्स इन द जनरली साउथ अमेरिका so that was in news तापरे which ministry is associated with the cinematography amendment bill ए तो बहुत इजी था हां तापरे बिल के पास लगा था साथी पोर्टल कौन एग्रीकल्चर सीड रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ओके वेरी गुड एटा तो आंसर ही टिक मार देछि which geographic region को हमें गोटे पर्टिकुलर नेम देथिले गोटे geography region जोटा कि हमें कोन करिया हाइड्रोजन सर्विस प्रोवाइड करियो दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन वैली ओके हां डिजिटल हाईवे तो इंडिया रो शिवा कोन कहू जंदी कि युवा No, पोर्टल sir. युवा पोर्टल एटा स्टार्टअप्स माने यूथ माने को स्टार्टअप Youth प्रमोट hub. करियो हां वेरी गुड यूथ अफेयर्स नेक्स्ट which state adopted resolutions urging the center to extend the quota of dalit christians को और कोटा को की माने तांको रिजर्वेशंस पडा को चाहूची इट इज तमिलनाडु ओके Milano. वेरी गुड तापरे बटन एनएमडीसी जो हमर अछि तो लिथियम रिजर्व को कंट्री रो एक्सप्लोर करे को चाहूची ऑस्ट्रेलिया Australia, sir. ठीक अछि हां तापरे व्हाट इज दिस द आसाम साइन एन एग्रीमेंट फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट विथ व्हिच स्टेट सर It's Arunachal Pradesh. ओके वेरी गुड तो सर्वे ऑफ इंडिया विषय पढ़िए सर्वे ऑफ इंडिया को मिनिस्ट्री अंडर आछि इफ यू डोंट नो देन रिवाइज होम मिनिस्ट्री ऑफ ना आर्ट साइंस अर्थ साइंस आछि ना ना मोस्पी अंडर आस्थो नाइ मोस्ट अंडर तो आसुनी देखि देबे गोटे थरो अर्थ साइंस अंडर आसी पारे बुद्धि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ठीक अछि तो गोटे मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जो हमें कोचू इनियोचोस 23 एटा कहा का भीतर हितला इट्स होस्टेड बाय ग्रीस By Greece. हाँ बहुत गुटे कंट्री पार्टिसिपेट करते इंडिया भी पार्टिसिपेट करते ग्रीस पार्ट बेले बेले डिफेंस रे फालतू क्वेश्चंस आस्ते दैट्स okay which indian ministry is associated with 100 food streets initiative dita ministry आउ health and urban affairs कोन करियो जो हम हाइजीनिक फूड तापरे टेलोस 2 एटा गोटे पीएसएलवी लॉन्च करथला इंडिया रो को कंट्री रो सैटेलाइट थिला सर सिंगापुर रो पीएसएलवी केते लॉन्च करथला एटा को सर 55 बेटा 55 वेरी गुड ओके नेक्स्ट होची द वोट फ्रॉम होम ए इनिशिएटिव टा फर्स्ट टाइम पे को स्टेट करथला कर्नाटक करथला ताको स्टेट असेंबली पे ठीक अछि 80 इयर रो जो माने अधिक ओल्ड एज होछन से माने को पे एटा गोटे फर्स्ट टाइम पे गोटे सेंसस हेतला वाटर सेंसस हमें कहूछु तो इंडिया रो जो नेचुरल वाटर बॉडीज अछन माने 97.1% रूरल एरियाज रे छन ओके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तापरे हाकी पाकी कोन एटा को ट्राइब कोट अछन Karnataka, sir. दिस इज कर्नाटक वेरी गुड एटा जो कहूछु हमें एरेवना आर्मेनिया रो ओके दिस इज आर्मेनिया कैपिटल as per the recent study what a protein jana hochi sungosin gives shape to which type of structure को structure बनने रे काम रहसे सर क्रोमोसोम chromosomes बनने Chromosome, sir. very good
तापरे मार्केट्स इन द क्रिप्टो एक्ट में यू आइन बने छे से देखि दे जाई देखि थी यूरोपियन ठीक है व्हाट इज द टर्म दैट डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन द इनकमिंग आउटगोइंग सोलर रेडिएशन जो में को ताको कोन कोजो सर अर्थ एनर्जी Earth energy अर्थ imbalance. एनर्जी imbalance ओके वेरी गुड gearing up to solve food security challenge co institute सर White AIM paper. AIM Atal Innovation Mission okay से पुणी यूएनएफ माने हम जो रहला कैपिटल फंड डेवलपमेंट मिलिंडा गेट फंड समस्त मिसी करछि एनकरेज करिवो ग्रोथ ऑफ द एग्री फोकस स्टार्टअप्स को ओके सेफ केरला प्रोजेक्ट रोड कौन मिनिमम एक्सीडेंट हां रोड एक्सीडेंट को Road मिनिमाइज करिया accident. वेरी गुड ओम पढ़नथली ना ना पढ़िनी हां अच्छा पढ़ देबे ठीक देह खराब ना अल्प टिके टिके ना ना जानिछि जे टिके टिके आपण क्लास रो माने पीडीएफ रो किंतु पाइ नथि पीडीएफ पाइनो नाइ सर पाइ कहबे ना पठे दियो हो आउटर ग्रुप पे पठे दो सर सेतरे तो एतेटा क्वेश्चन नथिला गोटे पीडीएफ रे ना एटा April मु नौ मार्च रो परे पठेली ना एप्रिल टा फर्स्ट पठाइतला सर एप्रिल टा जो सर पठेइथिले सेटा सर कंपाइल डे थिला सर डे वाइज टा सर एटा ता प्रीवियस रो सर पठेइथिले आपण बुझि माने पाली से एमसीक्यू नाही की हम भाई एमसीक्यू थिबो आई थिंक सर एटा एमसीक्यू टा आगुरु अछि सर फर्स्ट रे अछि सर एटा ओके ओके हो ठीक है आउथरे पठे दो कोन आउथरे पठे दी देखि ते थरे समझते व्हिच सिटी होस्ट द W20 इंसेप्शन मीटिंग G20 रो सर औरंगाबाद औरंगाबाद कटला एते इंपोर्टेंट न हो एसु छाड़ जोडा इंपोर्टेंट हो बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा देखो इज ए पार्ट ऑफ देखो अपना देश इनिशिएटिव रो एलिफेंट कंजर्वेशन नेटवर्क एटा इंपोर्टेंट कहार आसाम Assam. हां ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जाउची ताकू टैकल करिया पे ओके तो स्वान फेस्टिवल नॉट इंपोर्टेंट डिफेंडर ऑफ द सेंट्रल अदर लैंड डे हां सेंट्रल एशिया वे तो गोटे Central Asia. कजाकिस्तान नाही बेलारूस अछि ओके यू शुड बेटा रिमेंबर सर दैट कोन एटा डिफेंडर ऑफ द हां एटा गोटे टिके टिके रखो प्रोमिनेंटली सेलिब्रेटेड को एरिया रे सेलिब्रेट करछन से माने 1990 टू 19 टू से माने सेलिब्रेट करछन ए दिनो को होतला ना फर्स्ट मास ड्राफ्ट इनटू द रेड आर्मी ड्यूरिंग द रशियन सिविल वॉर इट वाज नाउ ए स्टेट हॉलिडे इन द रशिया गोटे टाइप ऑफ सेलिब्रेशन तांकर ठीक है तो which Indian has been nominated as Dr. अजय बंगा अजय अजय बाबू जानी थी नेक्स्ट होची ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट को स्टेट होस्ट करतला केरला केरला वेरी इंपोर्टेंट एटा दरकार नहीं हाँ आईएमएफ को को कंट्री रो कैन पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट इंडिया इंडिया India. धारोई वेटलैंड गुजरात गुजरात ओके Gujarat. ठीक है नेक्स्ट होची दरकार नहीं हाँ एटा गोटे देखि देबे हाय मु कहि शिवाल महाराज जो जे स्पिरिचुअल लीडर कहार ये जो बंजारा कम्युनिटीज रहले तांकर स्पिरिचुअल लीडर Yes. तो फर्स्ट मरीना कोठी हबो इट्स गोइंग टू बी इन कर्नाटक कर्नाटक ओके तो ठीक है उडुपी डिस्ट्रिक्ट प्रमोट करियो कोस्टल टूरिज्म को कोबरा वेरी इंपोर्टेंट मार्कोनी प्राइस का मिलची सर बालकृष्ण हरिबल हली बालकृष्ण वेरी Hari Balakrishna. मार्कोनी प्राइस ता कहा को माने को फील्ड रे मिले देखि देबे इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीजिंग द डिजिटल इंक्लूसिविटी थ्रू एडवांस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ओके तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर हाँ आईटी सेक्टर आई नॉट आईटी सॉफ्टवेयर नो कम्युनिकेशन स्पेशली ठीक अछि आगे तो सही सेक्टर रे जी कंट्रीब्यूट करछन्ते तो तांकर नोबेल प्राइज सर कंसीडर करा जाता को तो इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस करछि भारत गौरव डिलक्स टूरिज्म ट्रेन गुजरात हाँ गुजरात रो हेरिटेज एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम अंडर रे से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बाकी अन्य किछि जो चंपानेर आर्कियोलॉजिकल पार्क से सब देखियो नेशनल साइंस डे सर फेब्रुआरी 28 February 28. कौन ପାଇଁ କରୁଛୁ
ସାର୍ ଏଇଟା रमन इफेक्ट सीवी रमन को बर्थडे पाए टीवी रमन बर्थडे ना से दिन से रमन इफेक्ट ये माने सर रमन इफेक्ट रमन इफेक्ट रे नोबेल प्राइज नहीं से दिन रमन इफेक्ट से डिस्कवर करथिले ठीक अछि डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय चंद्रशेखर वेंकटस रमन ठीक अछि ओके डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट जदि माने फॉरेस्ट लैंड को जदि डेवलपमेंटल पर्पस जे हम डाइवर्ट करू तो कहा अप्रूवल दरकार एडवाइजरी कमिटी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी एडवाइजरी ठीक कमिटी अछि थोड़े देखिबे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी को के चेयर करछन तो दरकार मु पछाती हाँ एटा मिथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट के रिलीज करछि सर एटा यूएनईपी यूएनईपी आईईए ना आई आई बिकॉज एगुडा ना टिके बारंबार देखिया पड़े हमें कंफ्यूज है बहुत नंबर ऑफ हम आंसर देला पड़े तापरे बर्ड्स आई चिल्ली तो को कहा को मिजोरम मिजोरम आरी बेटा तो हम जान छे अलिव रिडली टोटल रो मास मिस्टिंग ओडिसा रो साइट रिव्यू ओजेम्पिक कौन एटा डायबिटीज डायबिटीज ओके इट्स अ टाइप 2 डायबिटीज therefore तो एटा गोटे डायबिटीज ट्रीट करिया पे गोटे ड्रग जाको जनरली आजिकली कंज्यूम कर दोछन वेट लॉस करिया पे तापर एटा गोटे शॉर्टेज क्रिएट होछि माइंड द जेंडर गैप एटा होछि सीएफए इंस्टीट्यूट हां माने जनरली कोन ना जो फाइनेंस सेक्टर रे फीमेल को कंट्रीब्यूशन माने बहुत कम रहउछि एटा जो गुरुमर डांग लेकटा एटा तो जानिथिबे सिक्किम रे अछि ओके ठीक अछि बाकी हमें नेक्स्ट खाली डिस्कस करिया ओके ଆପଣ जो पीडीएफ ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ओनली 100 समथिंग क्वेश्चन ଅଛି एप्रिल मंथ एप्रिल मंथ मु आउथरे सेंड कर दूची नले जदी का पाखरे अछि के टिके सेंड कर देबे सेटा ग्रुप आउट सर मु कर देबी सर मु कर टोटल ठीक अछि आउथरे सेटा मात्र टिके सेंड कर दो ओके आगे सर हां हां रश्मि सर G20 रो जो अदर लाइक होम एंड टूरिज्म से ना, डिफरेंट